आदाब नाजरीन, चलती रहेगी जिंदगी के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। कोविड का दौर जो सख्त तरीन दौर था वो गुजर तो गया, लेकिन अभी भी कोविड के केसेस जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोज बरोज कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि अब उतनी सिवियरिटी उन केसेस में नहीं देखी जा रही है, लेकिन अब एक ऐसा दौर भी आ चुका है जहां पर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग कोविड की या पोस्ट कोविड की। लॉन्ग कोविड क्या है, ये पोस्ट कोविड की कंडीशन क्या है, इसके क्या असरात जो है सेहत पर दिखाई देते हैं, इस पर हम जरूर बात करेंगे आगे चल के प्रोग्राम में। हमारे साथ डॉक्टर संजीव सिंह यादव साहब IMA नेशनल सेक्रेटरी जुड़ गए हैं। खैर मकदम है डॉक्टर साहब आपका। इस पर हम डॉक्टर साहब से ही जानेंगे कि आखिर ये लॉन्ग कोविड किस वजह से हो रहा है और इसका असर कब तक रहता है। साथ ही साथ हम इस पहलू पर भी नजर रखेंगे कि स्कूल का दौर अब आ चुका है, अब स्कूल फिर से खुल चुके हैं। बच्चे 2 साल की तवील अरसे के बाद अब क्लासरूम्स में वापस तो आ गए हैं, लेकिन अब किस तरह से उनकी एजुकेशन आगे प्रोसीड करेगी, क्योंकि लंबे समय तक वो अपने ही घर में महदूद रहे। ऑनलाइन टीचिंग के जरिए उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू किया, लेकिन इस सब के बावजूद जबकि ई-लर्निंग थी, मोबाइल फोन था और टेक्नोलॉजी के जमाने में बच्चों को एजुकेशन तो मिली। क्या अब स्कूल कोप कर पाएगा इन बच्चों के साथ? और सबसे अहम बात यह है कि अब जबकि सभी बच्चे एक अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने अपने घरों में पढ़ के आए हैं इतने लंबे अरसे तक, सबको एक पेज पर लाना, सबको एक साथ एक ही टर्मिनोलॉजीज को समझाना, ये कितना चैलेंजिंग रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एजुकेशनिस्ट भी जुड़ेंगी, उनसे इस पर मजीद हम बात करेंगे। लेकिन यह बात सही है कि कोविड के दौर से ही एजुकेशन को एक बैकफुट पर जाना पड़ा। एजुकेशन जो है काफी ज्यादा सफर हुई, और जब एजुकेशन सफर होती है तो उसका अफेक्ट हमें इकोनॉमिक सिचुएशंस पर भी देखने को मिलता है, और हेल्थ तो ऑब्वियस सेक्टर ही है कि हेल्थ पर तो अफेक्ट पड़ ही रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर विजया रानी साहिबा जुड़ चुकी है, एजुकेशनिस्ट और स्कूल प्रिंसिपल है। खैर मकदम है आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। मैम, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कोविड के दौर में, लॉकडाउन के दौर में जब स्कूल्स शट डाउन रहे तो बच्चों ने घर पर तालीम हासिल की, एजुकेशन हासिल की। ई लर्निंग के साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई स्टूडेंट्स को। नाउ जबकि स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स आर बैक टू देयर क्लासरूम्स, हाउ डिफिकल्ट दिस फेज इज एंड व्हाट चेंज आर यू ऑब्जर्विंग इन दीज स्टूडेंट्स? Shall I proceed, ma'am? Yes, absolutely, ma'am. In fact, a lot of drastic change occurred in the students, not only studies, but especially in behavior. Life skills निकल गया, और even studies पीछे हो गया, and even they have been completely deviated from their career, from their track. And they're facing so much a problem that still students are not on track, and we are not able to concentrate them, and we are feeling much difficult and more difficult. And of course there is no cooperation from the parents also. Parents are also not serious about it, and parents are they have taken the lenience of the parents, and then they're being completely away from their track, from the students track, and we are finding much difficulty with them, especially last year 10th batch. Right. Whose result is going to be released tomorrow, and I could not make them focus on their studies. And we have a strength of 302 for 10th batch of last year, and lot of trials we made. Even the students out of 302, hardly 120-130 students attended. Then after much trials, after many more trials, 250 attended, and 60 students no address. They simply come directly for the exam, for the pre-final exam, and they appeared. I do not know what is going to be tomorrow, the results, how we are going to receive it. So such a change had occurred in the students, because government also had passed the students for 2 years without exams. So that liberty these children have taken it, and they thought that this would happen even with this batch, with their batch.
So finally, we couldn't achieve the target which we need. We wanted to prepare them thoroughly, but we could not do. Not only So, that, even the life yes. skills are also lost in the students. Of course, ma'am. So, are we seeing any change in the enrollment also? And what do you think? What is the reason that parents are also not serious about sending their wards to their schools, or about their attendance and their classes? And how do you think that it is going to affect in coming years about their education and their degrees? Yeah, first of all, most of the parents faced financial crisis. They could not pay the fees, and fee defaulters are there for 2 years due to financial crisis, poor financial condition. Since parents are jobless, they could not pay the fees and they could not attend the classes, and they were not in position of sending their children. That is first thing. That's why parents could not encourage the students. But the parents who were able to pay the fees and make it everything normal, those students attended the school, and they attended online classes also, and they are good. Only the few students, suppose we have 3,300 children in the school. Out of these 300 children, hardly 2,500 students were regular to the school. Rest of the 800 children were not regular because they were not able to pay the fees. And then loss of death. So many people were lost in the families. They faced death crisis also, due to which the families were disturbed. And due to all these conditions, so they did not show the interest towards the child. They left the children like that. This year, after reopening of the school, all the students who did not attend 2 years of schooling, either online or offline, all are coming back. They're getting back now. So what we are doing is, we are asking them to clear the fees, or else last 2 years fees, even though they did not attend offline and online, because we cannot go for readmission. If they don't pay up 2 year fees, they have to go for readmission. We can't do that. So we are asking them to pay the fees. As you said that the people who are not attending and the parents who are not pursuing their students for further studies, it's mostly because of the financial situation they are going through. So should there be any relief for such parents, for such students, so that they can continue their studies? Pardon? Should there be any relief or any help for such students? Yeah, of course. Who are not, of course. Yes. As per the government orders, we have given discount for the fee structure. Mm-hmm. We have given nearly 30%, 35% discount we have given in the fee structure. That is one thing. Secondly, we have helped so many poor families. Ours is a missionary school. We helped so many poor people, and we also provided the books for them. And we also given lot of concession, 50%, 70% concession also was given to the few students, few parents who were really pathetic, who are in pathetic condition. And such students, they were regular to school, but for entire school was given the discount as per the government. We have given discount for everybody in the fee structure. And so they have come down to low fee structure. That's why they were able to clear it they were supposed to clear. And a few students who are remained stagnant, we started helping them from this year onwards. Suppose if a parents has to pay 26,000, we are deducting 6,000 and we are asking them to pay 20,000, so that the student will be regular at least from this year. But ma'am, we are also checking. Parents also say that when their children were not going school for 2 years, and many of the students didn't get even material, the required material from school as well, then why should they pay? That's the point that parents are also raising. Yes, but we have to cover the syllabus now, ma'am. We need to take a lot of risk this year. We need to pay a lot of attention towards those children. Lot of additional, because they lost 2 years basics. We need to give them special care for them. And giving them the basics that were lost for 2 years, we need to give special attention and special focus on them. That is one thing. Secondly, and if you don't clear the fees for these 2 years, they have to go for readmission again. We cannot continue the same. Okay, for 1 year means it is excused. But again, last year, actually, the schools were almost open.
5 to 6 months they were. But there were so many still uncertainties, ma'am. There were also the instructions from government, also from doctors as well, that it wouldn't be safe to go to schools even after lockdown. So the situation was all because of pandemic. And wouldn't it be better or more logical if they paid for the year they are going to school actually, and not for those times when they were not in the school or they were not being taught by this school staff? No, it's not like that, ma'am. But they need is compulsory. They have to be regularized with the school, and we need to continue their name for 2 years. And when they government ask in the future for their career, they'll be asking for the study certificates and conduct certificates. There should not be an interruption between. There should be a continuity in their studies. Then only we can give the certificate, or else break will be there. Suppose a 7th class student did not attend 8th and 9th. So we can show the attendance. Attendance also is compulsory. Attendance is mandatory. Whether online or offline, it is mandatory. Children did not attend at all. What attendance can we give? We can't give anything. Okay. So due to which the studies. Okay, we have with us Dr. Sanjeev Singh also. Dr. Sanjeev साहब ये बता दें कि ये जो अभी अब फेज देख रहे हैं कि बच्चे जो 2 साल तक स्कूल नहीं जा रहे थे और अब वो स्कूल जा रहे हैं, ऐसे में कई तरह की सिचुएशंस आ रही हैं. एक तो बच्चों का जहन जो है अब इस तरह से बन गया था कि मोबाइल पर पढ़ना है या फिर एक असाइनमेंट आएगा उस हिसाब से पढ़ना है, या तो अक्सर बच्चों को मटेरियल भी नहीं मिला. ऐसे में अब क्लासरूम में वापस जाना है, तो वो एक साइकोलॉजिकल क्या कुछ चेंज आएगी. और ख़ास तौर से ये सिर्फ साइकोलॉजिकल चेंज अब बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी है. तो इस फेज से अब किस तरह से साइकोलॉजिकली फाइट किया जाए? साइकोलॉजिकल चेंज ये भी हो सकता है कि बच्चे जब स्कूल को जा रहे हैं, इतने दिन घर में बैठे थे तो उनके प्रायोरिटीज अलग थे. अब जब स्कूल जाएंगे तो अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे, स्कूल के एटमॉस्फेयर में रहेंगे, तो साइकोलॉजिकली बहुत बेटरमेंट होने के चांसेस है. हालांकि उसको अडेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए. थोड़ा एकदम कल से एकदम शुरू करेंगे तो एक ही दम में वो बच्चे सेटल होना, मिक्स होना जरा मुश्किल रहता. बट साइकोलॉजिकली स्कूल जाना एक अच्छी चीज है जिसमें उन्होंने दूसरे लोगों से मिलते. मैं पिछली बार भी बताया था, एक फैमिली था जिसने अपना इंडिपेंडेंट घर छोड़ के अपार्टमेंट में घर लिया क्योंकि वहां बच्चे थे, दूसरे बच्चों से मिलना जरूरी था. तो स्कूल जाने में कोई ऐसा साइकोलॉजिकल डिफरेंस नहीं रहता. हालांकि आप टैबलेट पे पढ़ना या फोन पे पढ़ना ये सेकेंडरी चीजें, एक बार वो जाके शुरू करेंगे तो स्कूल में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते, जिसके वजह से उनके पढ़ना थ्रू वाया मीडिया पढ़ने की वजह से उनको फायदा हो सकता. तो साइकोलॉजिकल इशू खत्म होगा जाने की वजह से, ताकि बढ़ेगा. तो दिस इज वन थिंग. और पेरेंट्स को भी उनको भेजने में सहूलियत रहेगी क्योंकि काफी वर्किंग पेरेंट्स है, कभी पेरेंट्स घर पे रहते नहीं, बच्चा अकेले रहता था, तो ये इश्यूज जरा कम हो जाएंगे उसके वजह से. जी, आपको क्या लगता है कि अब स्कूल्स को किस तरह से प्रेप करना चाहिए बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए अब के दौर में, जब अब बच्चे स्कूल आना शुरू हो रहे हैं? क्या कुछ प्रिपरेशन स्कूल वालों को करनी चाहिए? देखिए, कोविड गया नहीं, कोविड जाएगा नहीं, कोविड और काफी दिन रहेगा. इसका मतलब ये है कि कोविड प्रिपरेशन जरूरी रहना. हालांकि इन्फेक्शन कम हो गया, डेथ पॉसिबिलिटीज कम है, इसीलिए अपन नेग्लेक्ट करना मुश्किल है. अभी भी मास्क लगा के थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने में कोई नुकसान नहीं है. ये करने की वजह से बच्चों के लिए सहूलियत रहेगी. बट इसको देख रेख करने के लिए टीचर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा. घर में तो ठीक है, 2 लोग रहते वो लोग मैनेज कर लेते, बट स्कूल में इश्यूज है. बच्चों में कोविड वैक्सीनेशन की वजह से कम हो सकता. वैक्सीनेशन लगाना काफी जरूरी है. काफी बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ. वैक्सीनेशन लगा के 2 डोज के बाद सेफ्टी फील करेंगे, बट उसके बावजूद भी आप प्रिकॉशन रहेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, दूरी मेंटेन करेंगे, तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा. इसके लिए पूरे क्लास को भरने के बदल वो स्पेसिंग स्कूल में अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसके वजह से बच्चों को काफी फायदा होगा. बिल्कुल, तो प्रिपरेशंस जो है जारी रखनी है. अभी भी अपना गार्ड जो है पूरी तरह से नहीं जाने देना है और एहतियात पूरी तरह से बरतनी है. डॉक्टर विजया रानी, आपसे जानना चाहेंगे, the phase that we saw during pandemic and it's still going on, we learned the new technology can help us with the education, with the classes for students. Has it helped, or it has created certain inequality among students who didn't get the opportunity to learn on a equal level
say suppose we have class 7 students and there are 30 students in the class, but they are all getting different level of education in their homes with mobile phones or internet, and different kind of material they are being provided. So has it created also an inequality among the students? No, they don't. Yeah, they never expressed here. Even neither parents expressed. No, because teachers have been sending PDF notes very clear, and the students did not suffer. Only thing is inequality is not observed among the students. All the students had taken the notes well, and attended even FA1 exams regularly, and no differences were observed among the students. And only thing is that these students, what they did in somewhat way, somewhat they even cheated the parents also, because most of the parents go for job and some parents stay at home, and these people did not attend the online classes. Just they used to enter into the virtual room, and they used to come out of that, and they never switched on the videos also. They were in their own business that we could trace, and then we corrected the students and informed the parents also. But there is no inequality such as some parents were able to give only mobiles, some parents laptops, of course, but those differences were not observed among the students, and no one discussed about this. Okay, so ma'am, I want to know that do we see that all the students are on same page now that they are in the classroom, or is that the teachers are facing some challenge to make these students to be on the same page? Yeah, of course, students are making trial. They are trying their best. Generally, we never show inequality, and children also don't feel inequality among their friends. They're very friendly, and the teachers also treat them equally, and equal opportunities are given, and proportionally their books, the attention is paid to all the students. And if any problematic students are there, they are given much importance, especially in like our schools. We put more concentration, more attention on the slow learners. We don't, teachers, it is a challenge for the teachers. But teachers, we don't concentrate much on the meritorious students. They will do their best, and we need not to focus on them. So since we concentrate more on the slow learners, so we don't find such a inequality or partiality among students, and neither this is not practiced by our teachers also. We always see, and we treat them equally. Especially for us, slow learners are most important. Okay, ma'am. Then only that yes, I want to know that the education system in India is in a very traditional way, that that is face-to-face education, going into the classrooms physically, and then teachers teach students. But this pandemic phase also suddenly brought this modern tech-based education, and it was initially very difficult. But I want to know, now that we are back to schools, will some of it be restored or kept in the curriculum, or we will be back to completely the traditional form and let go of the modern technology that we recently learned? Traditional form is the most beneficial to the students, because this online method is not at all good, ma'am. And the children cannot, physically they long to face the teacher physically than virtually. And whatever they have some doubts, they can directly contact the teacher, and they can face the teacher directly, and which is not possible online. And secondly, they'll be, children are very happy once they get into school, because they'll have a cordial relationship with their friends also, with their classmates and with their friends, and even with the teachers. So which they missed a lot all this when they were when they had online classes. But now they're enjoying the company of the friends and the classmates as well as teacher. So the physical classes shows lot of good impact on the children than online. And of course, children are enjoying coming to school now. Of course, Dr. Vijaya, students are liking to be in the classroom because they are getting to see their friends, meeting their teachers. So it's a good thing for their psychological well-being also. Also, I want to know that now that they are back in the classrooms, will the testing and exam method be same? Because there are some professors and experts who say that the way we test or exam our students should be a little modified, because we are testing the memory of knowledge when it should be actually to evaluate the aptitude and attitude based on that knowledge. Will it be somehow changed, or it's also going to be the traditional way?
Yeah, it's as per the state government, ma'am, because ours is a state school, state board school. So we go according to the government board norms only. We are not going to implement something else. But when we had virtual classes, we had objective type for 1 year, first year. And second year, we started giving them theoretical exams, even online. But we go definitely traditionally, and we go according to the instructions of the government board. Okay. As because we need to prepare them for 10th class, no, so we have to follow that method from the lower classes. राइट। डॉक्टर संजीव साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बच्चों पर तो अच्छा असर पड़ रहा है, लेकिन अब जो मसला देखने को मिल रहा है वो पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड जिसको कहते हैं, आपसे ये समझना चाहेंगे कि लॉन्ग कोविड कंडीशन क्या है और उसके सिम्टम्स क्या कुछ है? लॉन्ग कोविड उसको कहते हैं जो कोविड पॉजिटिव होने के बाद अगर उनके सिम्टम्स 2 या 3 महीने तक कंटिन्यूस रहे, उसको लॉन्ग कोविड बोलते हैं। बेसिकली लॉन्ग कोविड में थकान जल्दी होती क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो रहता वो कम हो जाता, जिसके वजह से लोग जल्दी सांस फूलना शुरू हो जाता, ज्यादा देर वॉकिंग नहीं कर सकते, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये लंग्स का इफेक्ट होने के बाद में इसको ब्रेन और हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट होता। बुखार कंटिन्यूसली, लो ग्रेड बुखार कंटिन्यूसली रहता। और सबसे बड़ी चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सांस लेने में तकलीफ होती। ये दम चढ़ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके वजह से ब्रेन को भी ऑक्सीजन बंद होके ब्रेन फॉग बोलते हैं इसको, ब्रेन का फंक्शनिंग उतना अच्छा नहीं रहता जितना नॉर्मली रहना चाहिए। ये थोड़े कॉमन सिम्टम्स है। नाक में से पानी बहना, गला खराब होना, ये तो बुखार आना, बॉडी एक्स होना। जनरलाइज बॉडी एक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक बार चिकनगुनिया आया था, आपको याद है कि नहीं, कि 20 साल पहले, जिसके वजह से लोगों के जॉइंट्स में काफी दर्द होता था। अभी भी ये सिम्टम्स मौजूद है। तो ये बेसिकली हार्ट, लंग और ब्रेन का मैनेजमेंट में इनको ग्रेडेड एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा। इनको रेगुलरली सांस बढ़ाने की एक्सरसाइज, स्पायरोमीटर बोलिए या योगा थेरेपी बोलिए या ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलिए, ये करने की वजह से इनका हेल्थ कंडीशन बेटर रहता। लॉन्ग कोविड इसको कहते हैं जी। और ये कब तक ये सिम्टम्स रह सकते हैं? क्योंकि WHO की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि 10 से 20% लोग जो है ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड कंडीशन के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कितनी सिवियर ये कंडीशन है और इसके जो ये इफेक्ट्स है ये कब तक रहते हैं? देखिए, रहने का कंडीशन तो ऐसा है, कोविड जब तक है, जब तक ये सिम्टम्स चलने वाले हैं। दूसरी बात, डायबिटिक पेशेंट है, जो उम्र ज्यादा है, जिनको पहले से अस्थमा की बीमारी है, लंग डिसीज की बीमारी है, जिनको हाइपोथायराइड है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, इनके लिए जरा खतरा है। ये इनको मैनेज करना मुश्किल है। बट बच्चों में ऐसा इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। इसके वजह से ये सिम्टम्स रहेंगे आपको 1-2-4 साल तक रहेंगे। ये 2-4 साल में अगर अपनी बॉडी की हेल्थ कंडीशन को आप इम्प्रूव करें, आप बाकी पैरामीटर्स को नॉर्मल रखे, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉकिंग करें, सांस लेने में थोड़ा इजी रहा। अब ये गर्मी की वजह से काफी तकलीफ हुई थी बीच में, अब जरा गर्मी कम हुई तो बेटर रहेगा कंडीशन। ये कितने देर रह सकता है अभी रिसर्च प्रूव नहीं किया, बट एक बात जरूरी है, अभी तो थोड़े केसेस बाहर आए, अभी मेरे ख्याल से इसका एक सुनामी आने का आसार है। इसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है, आप बीमारी से बचिए, मास्क लगा के फिरिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। हाथ आप जितना डिस्टेंस मेंटेन करें उतना ज्यादा हैंड वॉश करने की जरूरत नहीं है। ये सैनिटाइजेशन, जो हैंड सैनिटाइजेशन कर रहे थे उतना करने की जरूरत नहीं, हैंड वॉश काफी इंपॉर्टेंट है। ये मेंटेन करें तो आपको ये लॉन्ग कोविड सिम्टम्स आने के चांसेस जरा कम हो जाते हैं। सर, ये भी बताएं कि क्योंकि लॉन्ग कोविड में मल्टी ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और अक्सर जो डेथ्स भी सामने आ रही हैं उसमें एक पैनिक ये देखा गया है कि ये पोस्ट कोविड डेथ थी, जबकि कोविड से ठीक हुए बहुत अरसा हुआ। तो ये मल्टी ऑर्गन अफेक्ट होना क्या है और क्या जो वैक्सीनेशन है वो इससे प्रिवेंट कर सकता है? देखिए, अभी तक वैक्सीनेशन लेने की वजह से काफी लोगों की जान बच चुकी है। काफी इन द सेंस आप मल्टीपल्स ऑफ करोड्स लगा सकते। वैक्सीनेशन की वजह से इन्फेक्शन काफी कम हुआ है। ये नहीं बोल सकते कि कोविड का इफेक्ट कम हुआ, कोविड का इफेक्ट अभी भी है। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है। और बूस्टर डोज मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, अनपढ़ लोग नहीं लगा रहे, मैं समझ सकता हूँ, पढ़े लिखे लोग भी बूस्टर डोज लगाने के लिए आनाकानी कर रहे, क्योंकि ये समझ रहे कि कोविड खत्म हुआ। अभी कोविड गया नहीं और एक 2-4 साल तक कोविड को संभाल के रखना पड़ेगा, कोविड से बच के रहना पड़ेगा। अभी लॉन्ग सिंड्रोम, जैसे आपको बताया मैं, लॉन्ग कोविड बेसिकली छाती से शुरू होता, फेफड़ों से, उसके बाद में हार्ट को इफेक्ट करता,
फिर उसके बाद में ब्रेन को इफेक्ट करता है, इसको मल्टी ऑर्गन डिसीज बोलते हैं। एक बार ब्रेन और हार्ट का इफेक्ट हो गया तो आपको लिवर में, किडनी में, आंतड़ियों में, स्पेशली लोगों को क्रैम्प भी, एब्डोमिनल पेट में दर्द हो रहा है मोशन करने के टाइम पे, ये कोविड के आसार है। ये कोई डाइजेस्टिव डिसीज नहीं है, कोविड इंटेस्टाइन में काफी दिन रह सकता है, ये रिसर्च प्रूव कर चुका है। आपके मोशन के टेस्ट में भी कोविड पॉजिटिविटी आ रहा है। तो ये सिर्फ खाली थोड़े बहुत ऑर्गन, जैसे स्टार्टिंग में बताया था खाली ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है या खाली लंग को, मल्टी ऑर्गन मतलब सारे ऑर्गन को ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। जैसे डायबिटीज बताते हैं, डायबिटीज आने के बाद में खाली शुगर नहीं बढ़ता, आपको कैटरैक्ट भी आ सकता, आपको नर्व डिसीज भी आ सकता, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता, आपको सांस लेने में तकलीफ होती। ये मल्टी ऑर्गन डिसीज, ये कोविड बैक्टीरिया का एक स्पेशलिटी है। ये लॉन्ग कोविड में ये सब पॉजिटिविटी आता रहता है। तो ये बताएं डॉक्टर कि ये जो अब मल्टी ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, और खास तौर से क्योंकि डाइजेस्टिव इश्यूज जो है कोविड के बाद, ठीक होने के बाद, पोस्ट फेज में ज्यादातर लोगों की शिकायत रही है, एक तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की, और दूसरा जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिप्रेसिव बहुत ज्यादा लोग फील करने लगे। तो इससे किस तरह से निपटा जाए इन पोस्ट कोविड कंडीशन से? डाइजेस्टिव डिसीजेस कम करने के लिए सिंपल तरीका है। आप जैसा पहले अपन पुराने जमाने में सिंपल खाना खाते थे, दाल चावल रोटी सब्जी, अपने देश में, अपने कंट्री में ये ब्रेड बटर चीज पिज्जा, ये जो जंक फूड है उसकी आदत नहीं है। मगर आजकल ये जनरेशन को इसकी आदत पड़ गई। सिंपल गरम गरम खाना, जबी का जबी बना के खाना, स्टोर्ड या बॉक्स्ड फूड जो रहता उसको नहीं खाना। जितना देर आप फूड को बनाने के बाद रखेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर इफेक्ट आएगा। तो फ्रेशली मेड फ्रूट और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें तो ये डाइजेस्टिव डिसीज से आप जरूर बच सकते हैं। बिल्कुल, तो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फूड खाने की जरूरत है। डॉक्टर विजय रानी, यू हर्ड डॉक्टर संजीव as he was saying that COVID is not going anywhere at least for 2 to 3 years. How is your school prepped and how are your teachers trained? Yeah, we are sanitizing every day. The classroom soon after school is cleaned in the evening, and even at the gate, we give them sanitizer for the children, and we are telling them, insisting the students to bring the self sanitizers, and also we are trying to ask them put the mask, but sometimes parents don't send mask, and all those who are carrying the mask along with them, we ask them to wear the mask compulsorily. And then we are maintaining all the preventive measures we are keeping up. But thing is, sometimes since children out of their ignorance, and since these are the small kids, and there is no problem for us with the high school students, especially we are facing the problem with KG, first, second, third students. Out of their since they are small, they don't know what is what. So we have been insisting them, we are after them, and sometimes they don't carry mask along with them. So they need to be aware, and they need to be told that what should be done, and parents should be informed also. Ma'am, I quickly want to know, you told us about that how parents are being neglecting their students, their children from sending schools. I just want to know, those who are suffering from financial situation, will there be any way to help them, any way to bring those students back to school, because there's quite a large number that you said who are not coming back to school. Will there be any way to convince those parents? No, all most of the parents, students came back, ma'am. Now everyone are coming to school, and maybe exceptionally 1 or 2 cases, all are coming. Okay, ma'am. Thank you so much, Dr. Vijaya Rani. Thank you so much for talking to us, and Dr. Sanjeev Singh Yadav साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।